topic is inclination of the line. Students, जब कभी भी बात होगी inclination की, the very first thing that should come into our mind is angle. What is inclination? Inclination is an angle. There are so many types of angle. तो ये एंगल कौन सा एंगल होगा? हर एंगल को आप इंक्लिनेशन नहीं कहेंगे. इस एंगल की अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी. आई रिपीट, इट्स अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल. तो ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा. एक बात ये हो गई. व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन इज एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल. ओके सर. अच्छा जी, व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल. और ये मेजरमेंट कहाँ से होगी? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये मेजर होगा लाइन के लिए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में. ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, आप समझ लें. ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है. इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 4 एंगल्स फॉर्म किए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इन चारों में से एक एंगल जो इंक्लिनेशन है, इसे मैंने कहा 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. एंगल तो इस लाइन ने पॉजिटिव एक्सिस के साथ 4 फॉर्म किए. ये 4 पॉइंट्स पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं. 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. लेकिन इन चारों एंगल में से एक एंगल ऐसा है कि जो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है. तो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से अपवर्ड मेजर होगा. तो इस वक्त 2 एंगल एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड है. एक ये 4 डाउनवर्ड है, तो 4 तो कैंसिल हो गया. एक्स एक्सिस से आप नीचे आ रहे हैं और ये 3 भी डाउनवर्ड है, 3 भी कैंसिल हो गया. तो एक्स एक्सिस अपवर्ड 2 एंगल है. एक ये आपने 1 फॉर्म किया और ये आपने सेकंड फॉर्म किया. लेकिन आपको पता है 1 जो आप मेजर कर रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है और 2 जो आप मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज है. 1 इस तरह से एंटी क्लॉक और 2 इस तरह से क्लॉकवाइज. ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे. एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव. तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि इंक्लिनेशन इज अ पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंगल दैट अ लाइन मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस to the upward direction of the line, not parallel to x-axis, is called inclination. So only one angle left, that is angle 1. So for this line, angle 1 is called inclination. So ये angle की definition भी होगी, inclination भी समझा दिया, डायग्राम पे भी हमने देख लिया. उसी बात को इन्होंने आगे किया. Inclination थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. That is, it is the measure of the angle taken in the counter clockwise. Counter कहते हैं anti clockwise direction from the positive direction of x-axis to the part of the line above x-axis. तो ये इसी बातों को हम रिपीट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. So student, I have explained the topic inclination of the line, and now if you have any query you may raise your hand and ask me. Yes sir. Okay, then explain this topic to the class. Everyone is listening you. Okay sir. Sir, the inclination is the positive angle measured from the x-axis towards anti-clockwise direction, and the angle will be negative if it is taken in the clockwise direction. When we take an angle in anti-clockwise angle is is positive angle, clockwise angle is negative angle. Yes. Are you saying this? Okay. अभी बात करेंगे. One more important point regarding inclination I want to share with you that inclination is always from 0 to 180 degree. It is never negative. It is never 181 degree. It is from 0 to 180 degree. So keep in mind, inclination is from 0 degree to 180 degree. तो ये रेंज भी आप याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लोप ऑफ द लाइन.
This is second definition of the slope of the line. We had discussed. सर Yes. अगर जो एंगल 180 डिग्री से बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? वो उसे इंक्लिनेशन नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस से बिलो आ जाएगा। देखो ये एक्स एक्सिस है आपके पास, आप यहाँ से शुरू करोगे 0 है ऑन एक्स एक्सिस, कंप्लीट यहाँ पर आओगे ये 180 है, लेकिन इससे नीचे आओगे तो बिलो एक्स एक्सिस हो गया ना, तो डेफिनेशन वायलेट हाँ हो जाएगी। तो उन्होंने लिखा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, तो एक्स एक्सिस टू द अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस से नीचे आप नहीं आएंगे, उसे इंक्लिनेशन नहीं कहेंगे, वो एक नॉर्मल एंगल होगा। अहमद अफजल हैज ओके एंटर्ड द वेटिंग रूम। समझ आ गई बात वाली? यस सर Okay, slope of the line. This is second definition of the slope of the line. Before this, we had discussed one definition of the line in which we were given 2 points on the line, and whenever we have 2 points on the line, slope is determined by difference of y component divided by difference of their x component. But here we are discussing the slope of the line when its inclination is given. तो student जब भी आपको line की inclination देंगे और कहेंगे find out its slope, then in that case slope of the line is tangent of inclination. Just remember these two words, tangent of inclination. This one is tangent and this one is inclination. So whenever you take tangent of inclination, this is called slope of the line. For example, if here I have a line, we have a line, and if inclination of this line is 45 degree, I suppose inclination of this line is 45 degree, and question says what will be the slope of this line. We will simply find out its inclination, and here you can see its inclination is 45 degree. In your book, inclination is denoted by the word alpha, small alpha. So here in our discussion we are taking theta. We may also choose alpha. So inclination is 45. If you are interested to know its slope, you will simply calculate its tangent value. By definition, Hasnan Ali Sheikh raise hand. Yes, Hasnan. सर आपसे सवाल ये था सर, हमने पहले स्लोप लाइन पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, हमने जी। फॉर्मूला था y2 - y1, तो क्या जो अब हम स्लोप पढ़ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल पढ़ रहे हैं? With respect to inclination of the line. सर इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर सकते हैं? एलिब्रेट तो कर रहा हूं। अगर आपके पास स्लोप है लाइन का, ठीक है, और डेटा में 2 पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 तो नहीं कर सकते ना स्टूडेंट? यस सर। तो यहाँ पर अगर आपको इंक्लिनेशन दे दी जाए, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 45 इंक्लिनेशन ले ली लाइन की, तो इंक्लिनेशन जब डेटा में होगा, जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर डेटा में इंक्लिनेशन गिवन है और हमें स्लोप फाइंड करना है, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन का। बहुत सिंपल करके बात कर रहा हूं आपसे, बात समझ आ गई है? यस सर। ओके, सो एज वी नो दैट tangent of inclination is called slope. This is the definition, this is the formula. So we will start our working with this formula. So in next step we will take inclination as 45 degree. The example we are discussing here, for that line inclination is for 45 degree. So I am writing here tangent 45. So when you will calculate tan 45 value with the help of calculator, the answer will be 1. Tangent 45 is always 1. So this one is slope of this line. Slope of this line is positive 1. So here we have discussed inclination of the line and slope of the line for the case of inclination. Now we are going to solve question. Here I have just finished the topic. If you have any query, you may raise your hand and ask me. Well, student, any question from your side? I am making the screen clear right now. So no one have any question.
So I am going to start. Next slide. It is our next slide. Well, question starts. Question says, question number 6. What is the inclination? What is the inclination? So here we are going to find out inclination of the line and slope. So first we will investigate about inclination. After finding inclination, to find out slope, we will simply take tangent of that inclination. So how we will be able to find out inclination of a line? Let's check it. The line is bisector of the first and third quadrant. First, Hasnan, tell us what is the meaning of this bisector? What is the meaning of bisector? Yes? Yes, sir. Explain what is the meaning of bisector. Sir, in this question, it has been written that the bisector of the first and third quadrant mean the line passing and bisect the quadrant first and third will mean bisector. The bisector mean is to divide anything into two equal part. Here, Yes, sir. line divides first and third quadrant into two equal into part. two Clear? equal part. Yes, sir. Yes, sir. Here I am going to draw 4 bisectors. As we only have 4 bisectors, sorry, quadrant bisectors. It is our first quadrant. This one is our second quadrant. You people are familiar with the quadrants from the first year. Everyone is used to of quadrants, so I'm not discussing quadrant in detail. Here we have 4 quadrants, and our line bisects. Our line divide into 2 equal part, first and third quadrant. So I am drawing a line, and this line has bisected first and third quadrant. We all know in first quadrant the measure of angle is 90 degree. Okay, 0 to 90 degree. So when you divide this 90 into 2 equal part, this angle is called inclination, and from the word bisection we can find that the amount of this angle is of 45 degree. Is that clear? बेटा Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ 0 है, देखो यहाँ 90 है, आपने इसे बाइसेक्ट किया है, तो जो मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाइसेक्ट हो गया क्या बन जाएगा 45. मैं 45 ये इस लाइन की इंक्लिनेशन होगी. ये बात समझ आ गई तमाम स्टूडेंट्स को? हाउ इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज 45? सर वो इसलिए क्योंकि जो एक्सिस के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है तो उसका आधा जो 45 डिग्री हो गया. एक्सीलेंट. अब देखिए यहाँ लिखा है सिंस बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आल्सो बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस. जब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा जो 0 और y एक्सिस के दरमियान है, x और y एक्सिस के दरमियान है. x और y एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है. और इट मेक्स एन एंगल पाई बाय 4. रेडियन में पाई बाय 4 कहते हैं when the positive x axis. Thus inclination is pi by 4. It is pi, not it missing is something. ये pi by 4 है और 45. And slope of this line using formula tangent 45 and tangent 45 is 1. So we got inclination as 45 and slope as 1. I have finished this question. Even if you have any query, you may raise your hand and ask me. Yes, student, any question from your side? I am going to take one question from student. We are 18 participants right now. Ali Nasir, I have unmuted you.
Ali Nasir, I have unmuted you. Are you there? Raise your hand. Ali Nasir. It's Yes, sir. explain this question number 1. Then we will start question 2. Okay, sir. Sir, the question states that what is the inclination Ali and the Nasir, मैं slope आपसे of बात each of the करता हूँ following अहमद lines? बिलाल के In बाद. this question, we are asked to find the inclination and the slope. The first part states that the bisector of the first and third coordinates. Now we have to find inclination and the slope of bisector of first and third coordinate. Now bisector is a line that divides the segment in two equal parts. So here the bisector of the first and third coordinates also bisects the angles of both coordinates, and each coordinate had have an angle of 90 degrees. So after bisection it would become 45-degree angle with positive x-axis. Thus we find that the inclination is 45 degree for first and third coordinates bisector. To find the slope, we apply the formula for slope, m equals to tan theta, and we put the value of the theta 45, which becomes 1, and so we get the slope also. Excellent, excellent explanation. Point to point, correct explanation. Very good. Now we are moving on to the next slide. Right now I am making the screen clear. Well, here our line bisects second and fourth quadrant. If you read this question says, I'm taking the pen. Well, pen is not available. Well, I got the pen. Bisector of second and fourth quadrant. So I am drawing here 4 bisectors. After drawing these 4 bisectors, we have to draw here a bisector of second and fourth. This one is our second quadrant, and this one is our fourth quadrant. So I have drawn here a line that bisects second and fourth. And if you will see the angle in first quadrant, amount is 90 degree. In second, once again, this line bisects the amount of angle that present in the second quadrant. So in each quadrant, we know that the measure of angle is 90 degrees. So when you bisect 90, so this portion consumes 45 degree, and before this, the amount of angle is 90 degree. So in total, the sum of 90 degree and 45 degree becomes 135 degree. From positive x-axis to this position angle is called inclination, and sum of 90 plus 45 becomes 135 degree. So for this line which bisects the second and fourth, the inclination become 135 degree. I am explaining here, since the bisector of third and fourth quadrant also bisected the angle between x-axis and y-axis, vice versa. Therefore, it makes 90 plus 45. 90 plus 45. 90 in the first quadrant and 45 in the fourth quadrant. And their sum will gives us 135 degree. 135 in degree it is 135. In radian it is 3 pi by 4. So the inclination of the bisector of second and fourth quadrant is 135 degree, and to find out its slope we have to take its tangent, and tangent of 135 is always -1. So -1 is the slope of this line, and inclination of this line is 135 degree. I have done this question. If you have any query, may raise your hand to ask me question. Yes, student, I am taking your question. You may raise your hand. Hasnan, do you Yes, need sir. to ask any question? No, sir. Wali, everything is clear. Any question from your side? No No, sir. question, sir.
Well, I am going to unmute Ali Nasir, who was raising his hand. We have just covered second part. Now we are moving on to the next slide to see its third part. Third part is regarding find out slope of the x-axis. Fourth part is regarding find out the slope of y-axis and its inclination. The axis of x. Here in this question we have to find out inclination and slope for axis of x. As you see in the solution that here inclination is 0. How we got inclination 0 for axis of x? To see this we have to draw this diagram. It is our x-axis. यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस, अगर इसकी इंक्लिनेशन देखोगे, हमें तो एंगल मेजर ही एक्स से करना है. अगर किसी लाइन के लिए एंगल उसी लाइन से देखते हैं तो वहां पर तो 0 डिग्री होती ना, नो मूवमेंट, तो ओवरलैपिंग हो गई. ये दो लाइन है, अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल फॉर्म हुआ है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों लाइनें ओवरलैप करती हैं तो इनके जब ये बात आएगी ओवरलैपिंग की, तो एक्स एक्सिस के लिए एंगल देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा जो है वो 0 है, इंक्लिनेशन 0 है. मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टच आ जाए, आपको समझ आ जाए, रट्टा नहीं लगाएं. सो द एक्सिस ऑफ एक्स मेक्स 0 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. दोनों लाइनें सेम है तो वो इंक्लिनेशन 0 होगी. और फॉर स्लोप वी टेक टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन and the value for tan 0 is 0. So after this lecture you have to remember that for axis of x slope is always 0. We need this point in a few questions. There we directly use slope of the line is x axis is 0. तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसकी वर्किंग यहाँ हो रही है, एक्सप्लेनेशन यहाँ हो रही है, और इसके लिए इंक्लिनेशन भी 0 है. Student, we have done this part, and if you have any query you may raise your hand and ask me. Yes, any question from your side, students? Hasnan, Wali, any question? No sir. No question, sir. Okay, आगे मूव कर रहे हैं हम. Y एक्सिस, यहाँ आप इंक्लिनेशन को और बेटर वे में देख सकेंगे. I'm making the screen clear. Well, student, here I have drawn x and y axis. So I have to see the inclination for this y axis. So we will check the amount of angle that this line makes from positive x axis to the upward direction. So मैंने डायरेक्शन से बता दिया, ये इंक्लिनेशन है y axis का, and this amount of angle is of 90 degree. So for y axis what we got, for y axis inclination is of 90 degree. Here it is written that the axis of y makes 90 degree angle with positive direction. Okay, it is correct. Inclination is 90 degree. In radian we write pi by 2. For slope we will take tangent of 90, and tangent of 90 is always infinity. This is the sign of infinity. So you have to remember from now that for y-axis inclination is 90 degree and slope is infinity, and for x-axis inclination is 0 and slope is 0 degree. We have done question number 2. Even if you have any query, you may raise your hand. After this we are going to start a new question. And this question is very simple. We are going to see its solution now. A very simple one. Very simple one. Even we have done this part in question number 2, part 4. Find the slope of the line joining each of the following pair of points. Here we need to find out slope, and
line contains this point, and we know whenever line contains 2 points, slope of that line is determined by the formula, and that formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. From first point, we are going to consider x1, y1. It is not necessary to consider x1, y1 from 1, but we take 1, 1 from 1 point. 1, 1 means x1, y1, and 2, 2. Here 2, 2 means x2, y2 from 1 point. So just substitute these values in the formula. Formula is y2 minus y1. Make it clear. It is y2. It is y2. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Substitute all the values in the formula. These are the values. Suppose value. And the slope is minus 2. We have done this one. If you have any query, you may raise your hand and ask me. Yes, student. Yes, Hassan. Any question? Wali, No do you question, need to sir. ask any question? No, sir. Okay. So we are moving on to the next slide now. Here we are given 2 points whose coordinates are 5 minus 2 from, and second coordinates of second point are 3, 6. From first consider x1, y1. From second consider x2, y2. Substitute these supposed value in the formula here, and the answer comes minus 4. These questions are for practice, तो ताकि आप used to हो जाएं to find out slope when you know 2 points on the line. Student, this part is also done. We have 1.5 minutes, and if you have any query, you may raise your hand and ask me. Yes, student, any question? Well, we are going to start a new one. It is question number 8. From tomorrow, we will start question number 8. I am going to repeat whatever we have learned in today's lecture. Student, आज के लेक्चर में हमने इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन के बारे में पढ़ा है. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन की डेफिनेशन पढ़ी है. आई रिपीट, inclination is a positive smallest angle that a line makes from positive x-axis to the upward direction. Inclination की रेंज होती है 0 डिग्री to 180 डिग्री. फिर हमने स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में पढ़ा है. टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप. जब आपको इंक्लिनेशन गिवन होगी लाइन की और स्लोप मालूम करना होगा तो उस वक्त आप ये डेफिनेशन यूज करोगे. नेक्स्ट स्लाइड में आपने इसकी प्रैक्टिस की थी. इंक्लिनेशन और स्लोप फाइंड किया है डिफरेंट लाइंस के लिए. बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. यहाँ लाइन फर्स्ट और थर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है. जब 90 बाइसेक्ट होगा 45 होगा, तो इंक्लिनेशन 45 है.